Good morning students. So as we are studying about uses of dimensions के uses के बारे में पढ़ रहे थे हम. So one of next important use of dimension is to drive the relationship among various physical quantities involved in the physical relation. So write down please, to drive the relationship among various physical quantities involved in the physical relation. So किसी भी physical relation में जो different physical quantities होंगी उनके बीच में क्या relationship है, ये हम किसकी help से पता कर सकते हैं? With the help of method dimensional analysis या dimensions की help से इसका पता लगाया जा सकता है. So इस concept को समझने के लिए हम एक simple problem या example का use करेंगे. Write down please. The drive dimensionally the expression for drive dimensionally, the expression for centripetal force acting on a particle of mass small m moving with velocity small v in a circle of radius small r. सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है किसी पार्टिकल पे जिसका मास m है, मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r. लेट दिस सेंट्रीपिटल फोर्स बी f. सो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इसको समझने के लिए, ध्यान देंगे. We have to find the expression by the method of dimensional analysis. Dimensional analysis का यूज करके हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से different physical quantities के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश किया जा सकता है, उसको ड्राइव किया जा सकता है. So let F depends upon F क्या है? Centripetal force depends upon, किस पे डिपेंड कर रही है? Centripetal force. Let this centripetal force depends upon mass of the particle, velocity of the particle,
and radius of the particle or body, whatever be, that is smaller. So इसको क्या लिख सकते हैं? F is therefore, this F is directly proportional to MVR. So MVR में ABC क्या है? Dimensions, उनको भी साथ में लिखेंगे. Let A, B and C be the dimensions of M, B and R. So F is therefore F is directly proportional to M raised to power A, B raised to power B and R raised to power C. So F sign of proportionality को हटाएंगे, K be the constant, M raised to power A, M raised to power A, B raised to power B and R raised to power C. Now अब इसके बाद जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देंगे, राइटिंग द डायमेंशंस इन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. दोनों साइड्स में डायमेंशंस लिखेंगे. राइटिंग, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. Writing the dimensions in both sides of equation 1. इक्वेशन 1 में दोनों तरफ डायमेंशंस लिखेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की. तो आप ध्यान देंगे, फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्सेस MLT minus 2 is equal to K, which is constant, dimensionless. It is dimensionless. M raised to power A, M mass, velocity raised to power B, velocity की dimension, LT minus 1 raised to power B, and third is R raised to power C, which is a distance length, L raised to power C. So after that, next step is, क्या करेंगे next step में? Comparing the dimensions in both sides of the equation. Comparing the dimensions in both sides of the इक्वेशन 2. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब इसकी दोनों तरफ क्या करेंगे, डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ. कौन से प्रिंसिपल की हेल्प से हम इस फिनोमेना के यूज करते हैं? बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. By using principle of homogeneity. So सबसे पहले M, let it be raised to power 1, L raised to power 1 लिख सकते हैं. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें.
सो m रेज टू पावर a, इस तरफ m रेज टू पावर 1. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1. क्या आ जाएगा? a इज किसके बराबर? a इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट l रेज टू पावर 1 है. यहां पे l रेज टू पावर, ध्यान देंगे, l रेज टू पावर l रेज टू पावर b and also 1l is also here, l रेज टू पावर c. तो इसको क्या लिखते हैं हम? l रेज टू पावर b प्लस c. सो b प्लस c इज इक्वल टू 1. b प्लस c किसके इक्वलेंट है? 1 के बराबर. थर्ड t रेज टू पावर -2 और यहां पे है t रेज टू पावर -1 इंटू बी माइनस बी. मीन्स माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस बी -2 के बराबर. सो इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2. b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. Equation number 3, 4 and let this be 5. Now substituting value of b in equation number 4. So from equation number 4, equation 4 में हम देखें b प्लस c किसके इक्वलेंट है? b प्लस c इज इक्वल टू 1 के बराबर. सो c इज इक्वल टू 1 माइनस b. तो c इज इक्वल टू 1 माइनस b इज इक्वल टू 2. तो c इज इक्वल टू -1. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6. सो a b एंड c, a b एंड c, तीन वैल्यूज आपके पास हैं. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1. इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी उसमें. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज ऑफ a b एंड c. इसमें पुट करेंगे substituting values of a b and c in equation 1, that is f is equal to k m raised to power a, v raised to power b and r raised to power c. So therefore it will become f is equal to k m raised to power a and a is here 1, m raised to power 1, b v raised to power b and b is here 2, b 2 and r raised to power c. c is -1. So it can be written as, किस तरह से लिख सकते हैं इसको? f is equal to m v square r raised to power -1 upon r, और f is directly proportional to mv square over r. So which is the required expression for centripetal force, which is the required expression for centripetal
force. That is F is directly proportional to mv square over r. So इस तरह से आप इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, राइटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. डायमेंशनल फॉर्मूला राइट किया, डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में क्या फाइंड किया, कंपेयरिंग द डायमेंशंस, कंपेयरिंग द डायमेंशंस. ओके, कंपेयरिंग द डायमेंशंस. एंड थर्ड स्टेप में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी. क्या फाइंड किया, ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट किया. सो इस तरह से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स की हेल्प से. तो एक बार नोट कर लेंगे. इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम करेंगे. तो लिखेंगे द एस्केप वेलोसिटी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, द एस्केप वेलोसिटी of a body depends upon, let this escape velocity be small v, depends upon acceleration due to gravity, acceleration due to gravity g of the planet, of the planet, and radius of the planet, radius of the planet smaller. Find the relationship among different physical quantities, among different physical quantities by using method of dimensional analysis, dimensional analysis. The escape velocity of a body depends upon acceleration due to gravity of the planet and radius of the planet. Find the relationship among different physical quantities by using method of dimensional analysis. So dimensional analysis की हेल्प से रिलेशनशिप फाइंड करेंगे
So write down as velocity depends upon acceleration due to gravity and radius of the planet, therefore V is directly proportional to G R, and let A be the dimensions of G and R. Let A comma B be the dimensions of small g and r. Therefore, V is directly proportional to G raised to power A and R raised to power B. इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको. So V, फर्स्ट स्टेप मालूम है आपको क्या है. फर्स्ट स्टेप राइटिंग द डायमेंशंस, राइटिंग द dimensions in both sides of the equation. In both sides of the equation, दोनों तरफ equation के dimensions को लिखेंगे. velocity की dimension, therefore lt minus 1 is equal to g is acceleration, lt minus 2, and r is length, l raised to power b. So l raised to power 1, t raised to power minus 1 is equal to g raised to power a and r raised to power b. So l a t raised to power minus 2a, इस तरह से लिख सकते हैं इसको. l raised to power b. So कंपेयर करेंगे दोनों तरफ डायमेंशंस को. Therefore l raised to power a plus b and t raised to power minus 2a, t raised to power minus 2a, l raised to power 1, t raised to power minus 1. So therefore from equation 2 इक्वेशन 2 में अगर आप देखेंगे a plus b is equal to 1, a plus b is equal to 1 and t is equal to minus 2a is equal to minus 2a is equal to minus 2a is equal to minus 1. So a is equal to 1 by 2, a is equal to 1 upon 2 एंड सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू को यहाँ पे. a इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 1. therefore b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 by 2, so which is equal to 2 minus 1, that is 1 by 2. so b भी आपके पास कितना है 1 by 2 and a is also 1 by 2. सो a और b की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. सब्स्टिट्यूटिंग लिख लेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b in
equation 1, substituting the values of A and B in equation 1. So V is directly proportional to G raised to power A. G raised to power A means 1 by 2. R raised to power B means 1 by 2. So V is equal to K under root GR, or V is directly proportional to under root GR. So which is the required expression or relation which is in between the different physical quantities. So note down please. So next is limitations of dimensional analysis. कि dimensional analysis की कौन कौन सी limitations हैं वो देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं. अभी जो हमने डिस्कस किया, that was the important uses of dimensional analysis. Next are the limitations of dimensional analysis. Dimensional analysis के कौन कौन सी limitations हैं. देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा, जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस रही डायमेंशनल एनालिसिस मेथड की, हमने देखा कि हम जो भी कांस्टेंट टर्म है उसकी कोई भी डायमेंशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. डायमेंशनलेस जो क्वांटिटी है उस डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में जो ये डायमेंशनल एनालिसिस मेथड है उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने में क्या हो गया, ये फेल हो गया ये मेथड. सो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे. फर्स्ट इज दिस मेथड fails to explain about dimensionless constant. This method fails to explain about any dimensionless constant term. किसी भी dimensionless constant term के बारे में ये method नहीं बता पाया. Second important point, this method fails to drive the relations like, किस तरह के रिलेशन को ड्राइव नहीं कर पाया, like b square minus u square equal to 2as और s is equal to ut plus half at square. इस तरह के मेथड्स को भी ये जो डायमेंशनल एनालिसिस फिनोमिना है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, this method fails to
fails to explain about trigonometric functions, logarithmic functions, and exponential functions. So ये जो मेथड है वो इन डिफरेंट क्वांटिटीज के बारे में नहीं बता पाया, इन फंक्शंस के बारे में नहीं बता पाया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, since in this method we use only three basic fundamental physical quantities का यूज करते हैं. आपको मालूम है इस मेथड में ml एंड t का, मास, लेंथ एंड टाइम का. सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल रिलेशंस जिनमें इन थ्री क्वांटिटीज के अलावा अदर क्वांटिटीज का भी यूज होता है, दिस मेथड फेल्स टू टेल अबाउट देम. उन फिजिकल इक्वेशंस, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ये मेथड नहीं बता पाया. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट, एज in dimensional analysis only mass, length and time are used. So this method fails to explain about physical quantities. Method fails to explain about physical quantities which have does not have, इस तरह भी लिख सकते हैं, which have other physical quantities rather than these quantities, so इनसे अलावा जिन फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंट क्वांटिटीज इन्वॉल्व होंगी rather than mass, length, time, so उन फिजिकल इक्वेशंस, उन फिजिकल रिलेशंस को डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड जो है वो सॉल्व नहीं कर पाया. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज any physical relation which is dimensionally correct may not be a true physical relation, may not be a true physical
रिलेशन। सो कोई भी फिजिकल रिलेशन जो क्या हो सकता है, डायमेंशनली तो करेक्ट हो सकता है, बट उसको ट्रू फिजिकल रिलेशन नहीं बोला जा सकता। उसको ट्रू फिजिकल रिलेशन नहीं बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल S is equal to ut plus at square. For example, S is equal to ut plus half at square. डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली क्या है, ये करेक्ट है। अगर हम दोनों साइड्स की डायमेंशंस को कंपेयर करें तो एवरी क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बट दिस फॉर्मूला यू नो दैट जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि डायमेंशनली तो ये करेक्ट है, बट इट इज नॉट अ फिजिकली करेक्ट रिलेशन। फिजिकली इनकरेक्ट, फिजिकली इनकरेक्ट रिलेशन। फिजिकली इनकरेक्ट रिलेशन, दिस इज फिजिकली इनकरेक्ट रिलेशन। और करेक्ट रिलेशन कौन सा है, ये। So these are the some important limitations of dimensional analysis. Write down please. After then we'll continue in our next class. Thank you.